Assalamu alaikum. I am Dr. Khan Romana from Department of Zoology, JT Art Science and Commerce College for Women, Malegaon. Dear student, I heartily welcome you in my video lecture. In this video lecture, I will explain the functions of endoplasmic reticulum. In previous video, I explained the structure of endoplasmic reticulum. Now we see the various functions of endoplasmic reticulum. First function of endoplasmic reticulum is mechanical support. As you know that endoplasmic reticulum divides the fluid content of cell into the compartments and thus provide additional and mechanical support for the colloidal structure of the cytoplasm. तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करते हैं? दे डिवाइड्स द फ्लूइड कंटेंट ऑफ द सेल इनटू द कंपार्टमेंट. तो इस तरीके से वॉट एवर कोलाइडल सब्सटेंसेस आर प्रेजेंट इनसाइड द सेल्स, तो उनको जो मैकेनिकल और एडिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. नेक्स्ट फंक्शन इज सेलुलर मेटाबॉलिज्म. The membrane of the endoplasmic reticulum provides an increased surface for metabolic activities within the cytoplasm, such as synthesis of cholesterol, triglycerides, and other lipids, indicating their probable role in the lipid metabolism. तो दूसरा जो फंक्शन जो होता है इसका इम्पॉर्टेंट फंक्शन इज दे टेक पार्ट इन द सेलुलर मेटाबॉलिज्म. एंड endoplasmic reticulum also provide increased surface area for metabolic activities within the cytoplasm. साइटोप्लाज्म के अंदर जो मेटाबॉलिज्म होता है, जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है, मोस्ट ऑफ देम आर टेक्स प्लेस इनसाइड द endoplasmic reticulum, and they provide and they give much surface area for the synthesis of the lipids, cholesterol, triglyceride, etc. Or we can say that lipid metabolism takes place in the endoplasmic reticulum. Another function is a protein synthesis. Proteins are synthesized on the ribosomes, and ribosomes are located on the rough endoplasmic reticulum, and such synthesized protein enter the cisterna of the endoplasmic reticulum through the channel in the membrane. इस तरीके से जो प्रोटीन की सिंथेसिस होती है राइबोसोम के अंदर, एंड दे इंटर इनसाइड द एंडोप्लाज्मिक सिस्टर्ना ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम थ्रू द चैनल, और वहाँ से जो है वो they are stored or transported to the vesicles, and such vesicles are cut off and they migrate or transported to the Golgi complex, जहाँ पर जो है वो such protein molecules are stored. Free ribosomes are not active in the protein synthesis as those are associated with endoplasmic reticulum. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जो राइबोसोम्स होते हैं दे इन्वॉल्व एंड दे टेक पार्ट इन द प्रोटीन सिंथेसिस, और जो फ्री राइबोसोम्स जो होते हैं दे नेवर टेक पार्ट इन द प्रोटीन सिंथेसिस. अनदर फंक्शन इज अ इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्टेशन. Proteins including enzymes, lipids and other cellular materials are transported and distributed to the various parts of the cell through the endoplasmic reticulum. तो endoplasmic reticulum के ज़रिए जो है वो such substances, protein, lipids, enzymes etc. they are transported and distributed to the various parts of the cell through the endoplasmic reticulum. In some cases, these materials may accumulated and may be stored within the endoplasmic reticulum for a considerable time. और कभी कभी जो है कुछ वक्त के लिए जो वो लिपिड प्रोटीन्स they may be stored inside the endoplasmic reticulum for some times. Another function is detoxification.
Smooth endoplasmic reticulum is involved in the detoxification of many endogenous and exogenous compounds. तो जो सेल के अंदर या जो सेल के बाहर से जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस सेल में इंटर होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम परफॉर्म द फंक्शन ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ देम, उनको जो है वो डिटॉक्सिफाई करने का काम करती है. किस तरीके से होता है? फॉर एग्जाम्पल, prolonged administration of certain drugs results in the increased activity of the enzymes related to the detoxification as well as other enzymes and a considerable hypertrophy of the smooth endoplasmic reticulum. अगर लंबे अरसे तक कुछ ड्रग का अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है? इंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ इनसाइड द सेल्स आर इंक्रीजेस, और जिसकी वजह से जो जहरीली चीज़ें जो होती हैं उनमें जो डिटॉक्सिफिकेशन के चांसेस होते हैं, और इस तरीके से जो डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हार्मफुल कंपाउंड्स, इट मे बी इंडोजीनस और एक्सोजीनस, दे मे बी टेक्स प्लेस इनसाइड with the help of such enzymes. Another function is a membrane flow. Endoplasmic reticulum perform the function of membrane flow, or they take part in the transportation of the certain ions, molecules and particles into and out of the cells. May also takes place through the membrane flow. Thus, the substances like RNA and nuclear proteins may pass out from the nucleus to the outside of the cells. So, sometimes what happens, substances comes out from the nucleus via nuclear membrane. nuclear membrane में चीज़ें आती हैं और nucleus से चीज़ें nuclear membrane में आती है, and nuclear membrane having the pores, उसमें जो वो सुराख होते हैं, और उस सुराख के ज़रिए, pores के ज़रिए जो वो such substances like RNA and nuclear proteins, they first come to the nuclear membrane, then come to the pore से endoplasmic reticulum में जाती है, वहाँ से जो they reach to the Golgi complex, और Golgi complex से जो plasma membrane में जाती है. And as you know that plasma membrane is a semi permeable layer or membrane, और वहाँ से जो such substances may be passed out from the cell. तो इस तरीके से जो endoplasmic reticulum is also involved in the transport of the ion molecules particle in and out of the cell. Another function is a formation of plasmodesmata. Plasmodesmata is a spherical or button-like structure. It is actually connection between the two joining cells. Adjacent cells, दो सेल जो पास पास में होते हैं उनको जोड़ने का काम जो प्लाज्मोडेस्माटा करते हैं. एंड इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन द इंटरकनेक्शन ऑफ द सेल थ्रू द साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स कॉल्ड प्लाज्मोडेस्माटा. तो प्लाज्मोडेस्माटा में बी फॉर्म्ड बाय द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और उसकी मदद से जो वो प्लाज्मोडेस्माटा की मदद से जो वो टू सेल्स आर ऑलवेज ज्वाइंट टुगेदर, उनमें जो कनेक्शन होता है. Another function is the origin of cell or organelles. There are various evidences shows that endoplasmic reticulum is the place for the origin of the organelles of the cell, like Golgi complex, lysosome, etc. As you know that main function of endoplasmic reticulum is that synthesis of the protein, and such protein molecules are transported to the vesicle, and such vesicles are cut off or pinched off, and they are transported to the Golgi complex, और Golgi complex से जो वो lysosomes, primary lysosome का formation होता है, and such lysosomes are filled with lytic substances or enzymes, and such protein molecules are nothing but enzymes जो होते हैं वो प्रोटीन होते हैं. इस तरीके से जो वो endoplasmic reticulum is also involved in the formation of the cellular organelles like Golgi complex or lysosome.
Another important function of the endoplasmic reticulum is that they also take part in the development of the amphibians. Now, there are evidences that endoplasmic reticulum contributes in several ways to development of the amphibian embryo. Embryonic development of the uh, frog or other amphibia, it may be controlled or it may be takes place with the help of endoplasmic reticulum, or endoplasmic reticulum may involve in the embryonic development of the amphibians. And the last function is a cell differentiation. When the cells are changed from one form to the another form, this phenomena is called as a cell differentiation. And the endoplasmic reticulum important in the process of the cell differentiation and coordinating the differentiation. In this way, these all are the important functions of the endoplasmic reticulum. Thank you.